Assalamu alaikum and welcome back to Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bubulia. This is the second part to the show. Just before the break, we were looking at the position of European nationals and their family members. But we've had a number of calls, so let's go to the call first. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। जी भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी भाई, आपका क्वेश्चन क्या है? जी भाई, मेरे को एक इंटरनेशनल लॉयर चाहिए। जी। आप मेरे इंटरनेशनल केस लड़ सकते हैं? हाँ, इट डिपेंड्स कि किस टाइप का केस है, किस कंट्री में आपका डिस्प्यूट है। जी, वो इस पे डिपेंड होता है। अच्छा, मेरा नाम मैं लंदन में आ चुका था 2002 में। ओके, ठीक है जी, ठीक है। मैं अफगानिस्तान से हूँ जी, इन लोगों ने मेरे पीछे अफगानिस्तान में इन लोगों पर मेरे घर पर बम डाला है। जी, ओके। मेरा इनकम एक्सपोर्ट कारोबार था। मेरा 50 काऊ का दूध का बिजनेस था। जी, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं यहाँ यूके जब आएगा, मेरे पर 10 साल मैंने अस्पताल गुजारा। ओके, ओके। 10 साल मैंने अस्पताल के डॉक्टर ने बोला कि आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ओके, एंड फ्लैशबैक है, हैंगिंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम, आपने बहुत चीजें लॉस किया। जी, ठीक है, ओके, ओके। मेरे को 15 साल 10 साल मैंने पूरा अस्पताल में रेगुलर गुजार दिया, जैसे आप इनमें होते हैं। ठीक है जी, जी, उसके बाद मैंने यहाँ केस किया था होम ऑफिस के साथ। मैंने डायरेक्ट उसके साथ ये बात किया कि आपने मेरे पीछे जिंदगी बर्बाद किया था, आपने मेरा सब कुछ, आपका फोर्स नहीं किया, आपने सब कुछ किया था। तो आपने कोई इन लोगों ने कोर्ट में केस डाला था आपने? क्या किया था? मैंने कोर्ट में डाला था, मैंने कोर्ट में केस डाला था। कोर्ट में मेरे को क्या दिया इन लोगों ने? एक रिफ्यूजी पासपोर्ट होता है, रिफ्यूजी स्टेटस होता है। जी, ठीक है 2014 अक्टूबर में मेरे को इन लोगों ने रिफ्यूजी स्टेटस दिया। जी, एक 1 बेडरूम फ्लैट दिया, जी, प्लस इसने मेरे को बेकारी करार दिया। जैसे आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये एक किस्म मेंटल इशू होता है। ओके, ठीक है जी, मैं एक बिजनेसमैन था, जी, मैं एक जेन्युइन बिजनेस करता था। मैं एवरी वीक $10,000-15,000 कमा सकता था। जी, मगर इन लोगों ने मेरे को 5 साल का स्टे दिया। नहीं, 5 साल में रिफ्यूजी स्टे होता है, जो जी, आप रिफ्यूजी स्टे दिया, प्लस ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया, जी, एक फ्लैट दिया, वीक का 300 पाउंड मिलता है, प्लस रेगुलर मेंटल हेल्थ का जो वो मिलता है। जी, और इन लोगों को मैंने कोर्ट में सब कुछ साबित कर दिया। मैंने इसको बोला कि आपके कंट्री में मेरा कोई इंटरेस्टिंग नहीं था, आपने 9/11 की वजह से तुमने मेरा फैमिली को मार दिया, मेरा खाऊ को मार दिया, मेरा बिजनेस को मार दिया। ये सब इसने मान लिया, जज ने भी ये मान लिया, सबने मान लिया। जी, मगर मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरे को ये इंसाफ इन लोगों ने दिया, ब्लडी एक पासपोर्ट दिया, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, रिफ्यूजी स्टेटस, ठीक है, एक फ्लैट मिला है मेरे को, एक मेरे को 300 पाउंड। ये लोग जो बेनिफिट होता है, क्या होता है मेरे को सही समझ भी इन लोगों के, जो 300 पाउंड बेनिफिट होता है, अनफिट वर्क होता है, ये मेरे को मिलता है। जी, मैं होम ऑफिस को बोल दिया कि आपका फोर्स मेरे को मार दिया, आपने जो बेचा था 9/11 में, मैंने कोर्ट में हर चीज साबित कर दी। आपने मेरा बात पर नहीं किया, मैंने कोर्ट में सब कुछ जीत लिया, साबित किया, मगर मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिला भाई। मेरे को इंसाफ चाहिए कि इन लोगों ने बैक मेरा डैमेज किया, मेरे फैमिली को मार दिया, मेरे परिवार को इसने खत्म करवाया, मेरा बिजनेस भी इन लोगों ने खत्म करवाया, हर चीज का सबूत है मेरे पास। जी, जी, मेरा पास आप क्या बोलते अफगानिस्तान का जो हमारा गवर्नमेंट होता है ना, कंफर्मेशन लेटर होता है, जी, जो हमारा साथ जो इन लोगों ने नेटो फोर्स ने जो किया, जी, मगर इन लोगों ने आके बंद करवाया। ये बोलता है मैंने जी, आपको बेहतर ठीक लाइफ है, दी है। जी, ठीक है भाई साहब, आप ऐसे करो, आपका नंबर आप कंट्रोल रूम में छोड़ दो, मैं आपको जो लॉयर्स इसके बारे में जो काम करते हैं ना, उसका नंबर और उसका फर्म का डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। आप नंबर छोड़ दो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह फॉर योर कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, वो बात चल रही थी, मैं आगे करता, आपने वो जरा ब्रेक आएगी, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू जी, करेंगे। जी, जी, ठीक तो है, ये जी, बहुत शुक्रिया, आपने होल्ड किया और आपने मुझे ये टाइम दिया। जी, तो वही फ्रेंच की आप बता रहे थे। तो अभी जो है वो जी, उसको क्या, एक तो इस्लामी तो वो होगी, राइट, मगर उसको सबूत पेश जमा करने पड़ेंगे अपने। हाँ, तो अब बेस्ट क्या है कि इस्लामिक शादी होगी, वेडिंग फोटोग्राफ्स होंगे, बिल्स सब कुछ दोनों के नाम पे डाल दो, फोटोग्राफ्स वो लेते हैं ओवर टाइम, जैसे ईद पे लेते हैं, व्हाटएवर, जी, शादी समझ में, गई, तो ऐसे कोई एविडेंस बनाओ ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक। इसके बाद बेस्ट ऑप्शन क्या है कि कोई एप्लीकेशन डालना चाहिए। जब कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस के साथ चल रहा है तो एट दैट टाइम आप उसको कहो कि आप शादी को रजिस्टर भी कर लो। थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, शादी रजिस्टर करनी पड़ेगी,
क्योंकि अगर शादी रजिस्टर करने के लिए जाएंगे तो वो रजिस्टर ऑफिसर इसको बुला के फिर वो बॉर्डर पुलिस वालों के हवाले नहीं करेंगे? नहीं, वो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार जो होता है वो होम ऑफिस को बताना पड़ता है उसको कि ये शादी के लिए आए हैं, तो होम ऑफिस फिर डिसाइड करते हैं कि ये शादी को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे या नहीं करेंगे। मगर ये जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपका उसके पास जो भी प्रूफ है कि ये जेन्युइन है, तो वो एविडेंस पहले बना वो तैयार करना है ना उसको। तो वैसे लड़की जो है वो फ्रेंच पासपोर्ट होल्डर है। कोई बात नहीं ना, तो वो ठीक है, वो यूरोपियन नेशनल है, तो एक तो वो रिलेशनशिप का प्रूफ है वो बनाना है। एट सम स्टेज उसको रजिस्टर करना चाहिए उसकी शादी, स्ट्रेट अवे नहीं, 6 मंथ्स के बाद, 1 साल के बाद, जो भी है वो। थर्डली, लड़की को यहाँ काम करना या बिजनेस चलाना ऐसा कुछ करना ज़रूरी है, ये काफ़ी नहीं है कि लड़का ये करे। लड़की को एज अ यूरोपियन नेशनल, वो जो कहते हैं शी मस्ट एक्सरसाइज ट्रीटी राइट्स, तो ये दोनों, इसमें 3 थिंग्स आपको है। एविडेंस ऑफ द रिलेशनशिप तैयार करनी है, एट सम स्टेज उसको शादी रजिस्टर करना चाहिए, और थर्डली लड़की को ऑफिशियली काम करना पड़ेगा। ये 3 थिंग्स है। सो ये मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रेट अवे रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाओ, पहले कोई एविडेंस बनाओ, उसके बाद डिसाइड करो कि अभी कैसे नेक्स्ट स्टेप लेना है। तो ये बेसिकली इन प्रिंसिपल ये 3 थिंग्स उसको करना पड़ेगा। शादी के लिए इसलिए मैं कहता हूँ कि बगैर शादी का जो एप्लीकेशन डालते हैं होम ऑफिस को, ऑन द बेसिस ऑफ वो कहते हैं अनमैरिड पार्टनर्स, ड्यूरेबल रिलेशनशिप, इस इस्लामिक शादी पे वो जनरली वो रिफ्यूज़ करते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल है। शादी करके जब एप्लीकेशन डालते हैं तो इसमें अगर वो रिफ्यूज़ भी करते हैं तो उसको अपील देनी पड़ती है। अगर बगैर शादी का वो एप्लीकेशन डालेंगे तो अगर वो रिफ्यूज़ करेंगे तो वो अपील उसको देने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपके जो भी भाई के लिए फ़ोन करें। सो ये 3 थिंग्स है, एविडेंस ऑफ द रिलेशनशिप, एट सम स्टेज शादी को रजिस्टर करना, एंड फाइनली सो एविडेंस ऑफ द रिलेशनशिप, एट सम स्टेज यू नीड टू register the marriage, or the girl should be working. So there are 3 things you need to keep in mind in principle. अच्छा, ये सब जब चीजें वो कर लेंगे फिर उसको वो स्टे देंगे तो फिर वो क्या करेंगे? उसको 1 साल की स्टे देंगे इंडेफिनिट की? 5 years के कार्ड देंगे उसको। तो 5 years उसकी ये नहीं कहेंगे तुम ओवर स्टे यहाँ के हो हमारे मुल्क में हो? वैसे नहीं, यूरोपियंस के साथ जब शादी करते हैं तो वो रूल्स डिफरेंट है उसका, उसको वीज़ा देते हैं। अगर वो ब्रिटिश लड़के के साथ शादी करता है ना तो उसको वीज़ा नहीं देते चिल्ड्रन के बगैर। यूरोपियंस के साथ डिफरेंट है, यूरोपियंस में ओवर स्टेयर्स को भी एंड विदाउट एनी चिल्ड्रन उसको वीज़ा मिल सकती है। अच्छा, अगर बच्चा हो जाए तो और आसानी हो जाती है। और आसानी, थोड़ा सा वो एविडेंस ऑफ द रिलेशनशिप पक्का हो जाता है ना जी। अच्छा, ऐसे करेंगे कि अगर मैं उनको कहूँगा कि चलो वो तो आपने बताया कि उन्होंने कहा कि आपको टैक्स करने, टैक्स करने के बाद फिर आप दे देंगे नंबर में, फिर जो है ना, क्योंकि मेरे बहुत से आदमी जब पूछते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा तो आपसे वो करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं आप जरा अच्छी देंगे, फिर जो कुछ आपका अगर आपको केस दे देंगे करेंगे तो कुछ चार्ज वगैरह कुछ, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर आपका नंबर छोड़ दे कंट्रोल रूम में तो फिर हम बाद में बात कर सकते हैं। अच्छा, समझ बाद में हम करेंगे ये बात बाद में। जी, थैंक यू आपने जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत मानी जी, नो प्रॉब्लम है, जज़ाकल्लाह। ओके, विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी भाई। भाई आपका आई थिंक टीवी का वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा लो कर दो। I want to ask, why are they still treating British returning back to UK under surrender side as an European citizen? Sorry, say again. I think you might just need to speak up a little bit. You were saying, sorry, if you ask your question again, please. Yeah, British returning from Europe that have exercised treaty right, why do they treat them as an European when they come back to Britain in UK? The whole idea behind it is this, that if somebody has, as a British national, if somebody has left the country, gone to a European country, and they've lived with their husband and wife there, so what they then say is that it should be easier for the partner, who is not a British national, the partner, to come to the UK and live here. So if you've exercised, as a British citizen, you've exercised your right as a European national to go and work in a European country. So you're exercising treaty rights, you're using European laws to go and work in a country. In order to encourage people to do that, in order to ensure that there are not too many hindrances when somebody does that, that's why there is a law within the European rules which says that, okay, if you want to then come back to the UK, it will be under European rules, which are normally more flexible than the country's normal national rules governing immigration laws.
So it's really to facilitate the movement of people within Europe. If somebody goes there and knows that in 2-3 years time, if they want to come back to the UK with their partner, it's going to be easy to do it. That's why these rules exist, in order to make it easier for those people who've gone out to a European country, lived there, worked there with their partner. It makes it easier for them to come back, because European rules are, generally speaking, much easier to comply with than normal UK immigration rules. So that's the idea behind it. The problem is, what the UK government's done over time is, what's meant to be an easy route back, they've made it more difficult by introducing more requirements that need to be fulfilled. So they're trying to discourage people, they're trying to make it more harder for people to come to the UK using the Surinder Singh route. Obviously, one of the things that's happened with the Surinder Singh route is that people have started using that route in order to get around the UK immigration laws. It's been open to abuse, and that's why the approach that the UK government has taken is to try and clamp down on that rule, to try and introduce more conditions which need to be satisfied, etc. So the concepts such as, you're, as a British national, when you've moved to Europe, was that genuine residence there? Did you move the centre of your life there? A lot of requirements have now been introduced to make it more difficult for somebody who wants to use the Surinder Singh route, the route to come back to the UK with their partner. It's been made more difficult. But thank you very much for your call on that. Thank you very much indeed. Okay, I think we have a number of callers waiting. We'll take our next call. Hello. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you for calling. जी, what's your question? मैं एक बांग्लादेशी हूँ. जी. मेरी को 5 साल की. जी. सुनाई नहीं है. मेरी को 5 साल की रेफ्यूजी वीसा मिली हुई है. मेरी को ये जाननी थी, मैंने तो इस 5 साल के अंदर बांग्लादेश में जा नहीं पाऊंगी. मैंने कोई बांग्लादेशी को इंडिया लाके शादी करना चाहती हूँ, तो कैसा रहेगा? Okay. मेरे लिए आसान होगा कि नहीं? So, अच्छी तरह जी, अभी जो आप यूके में रहते हैं, तो आपका अभी जो स्टेटस है वो क्या है? आपके पास वीजा है, क्या है? रेफ्यूजी वीसा मिली हुई है लास्ट महीने पे मेरे को. आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस है यूके में? जी, ठीक है. और जिसके साथ आपने शादी की है, तो वो आपने रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई किया था, इससे पहले शादी हुई थी या अब? नहीं, मैंने कोई बांग्लादेशी को इंडिया लाके, मैं भी इंडिया जाके उनको साथ शादी हुई, तो कैसे रहेगा? आने के लिए आसान होगा मेरी को? नहीं, आपके लिए जो नॉर्मल जो रूल्स होते हैं ना, जो यूके के रहने वाले होते हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में शादी करते हैं और उसको यहाँ उसको स्पॉन्सर करके यहाँ लाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रूल्स है ना, सेम रूल्स आपके लिए है. जो हमने पहले भी बात की है, जो इसमें एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है कि आपकी इनकम 18,600 की होनी चाहिए, वो लॉ भी आपको अप्लाई होगा. जो भी रूल्स नॉर्मल यूके वाले को अप्लाई होता है, वो रूल्स आपको भी अप्लाई होगा, एग्जैक्टली द सेम. आपको भी अप्लाई होगा. असल में प्रॉब्लम क्या है, जो जिसको रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है उसके लिए थोड़ी सी आसानी है, मगर वो सिर्फ इसके लिए है जो आप जो यूके में आए थे, इससे पहले अगर आपकी शादी हुई थी और आपने उसको शादी के बारे में बताया होम ऑफिस को, लुक आई एम मैरिड, एंड इसके बाद आपको रेफ्यूजी स्टेटस उसने यूके में दिया, तो वो सिचुएशन में इट्स ईजी फॉर जो आपकी शादी पहले हुई थी यूके में आने से पहले, उसके लिए इजी है यूके में आने में. उसका एक सिस्टम है, समथिंग कॉल्ड अ फैमिली रियूनियन एप्लीकेशन. इट्स मच ईजियर उसको बुलाने के लिए. मगर जब आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है, इसके बाद आप शादी करते हैं, तो इसके लिए नॉर्मल रूल्स अप्लाई होते हैं. जो 18,600 वाला जो घर बताना पड़ता है, जो भी नॉर्मल रूल्स है वो अप्लाई होता है आपको. ला जा सकती है इंडिया से? 100% बांग्लादेश नहीं कोई ज़रूरत नहीं. आप इंडिया से इंडिया में भी शादी कर सकते हैं, और आप बांग्लादेश तो नहीं जा सकते क्योंकि आप बांग्लादेशी नेशनल हैं और आपका रेफ्यूजी स्टेटस है, वहाँ नहीं जाना चाहिए आपको. मगर आप शादी कर सकते हैं कोई भी जगह पे. इंडिया में शादी करो, पाकिस्तान में शादी करो, दुबई में, जहाँ भी आप लीगली शादी कर सकते हैं वहाँ लीगली शादी कर लो, और फिर वो अप्लाई कर सकता है वो जो भी उसकी कंट्री है, जो जहाँ भी वो रहता है लीगली, वहाँ से वो अप्लाई कर सकता है. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
मगर यूके जो रूल्स होता है सबके लिए सेम होगा, सेम सब देश होता के है, लिए। बिकॉज इसलिए है कि आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिला, इसके बाद आपकी शादी हुई, ये शादी होगी, इसलिए नॉर्मल रूल्स आपको अप्लाई होगा, नॉर्मल। जी जी, ठीक है ना, ऑलराइट है, थैंक यू है, आपने फ़ोन किया, थैंक यू। विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Hello, Assalamu alaikum. जी, वालेकुम सलाम जी। I'm calling from Sheffield. My name is Ahmed. Okay. Actually, I wanted to ask you two questions about my immigration status. That's fine. I came here in 2005. My wife came here in 2007 as a dependent of mine. Okay. And then after several kinds of application we made, we changed our status to the different category. Okay. In 2014, we seek asylum. My wife seek asylum with the 3 kids and myself as well as a dependent. Okay. Then we failed the asylum seek. We failed on this asylum application, and in 2018, in July, 8th of July this year, Okay. we applied for under the 7 years rule FLR-AP Okay. with the fee waiver. How many children do you have? 3. Okay. How old are they? The oldest one is 8.5 right now. Okay. And then other one is 3.5, and the other one is like 2 months. And have they all lived in the UK, born in the UK? They all of them born in the UK. Okay, I understand. Thank you. Yeah. Okay. Carry on. So it's still, the fee waiver we have been given the biometric letter on the Understand. last year December. Okay. We submitted the biometric as well. Now my question is that still we didn't get anything from the Home Office. Okay. And how long it's gonna take, and what is the procedure we need to follow? The current processing time for FLRFPs is around 8 months. 8 months. 8 months is the current processing time for FLRFPs. Now, the processing time varies depending on how busy they are, depending on whether they've got caseworkers or the caseworkers have left, etc. It just depends. But generally, we have an idea because we submit quite a few applications. So we generally have an idea as to how long it's taken. In my experience, at the moment, it's taken about 8 months to get a decision. Even though if it is the fee waiver? Fee waiver, has your fee waiver application been accepted or not? I believe so, because they send us the biometric without any fee. We are on the NASIPR, so last year December they submitted. We submitted our biometric without the fee. So I assume that the fee waiver has been accepted. Okay, all right. Do you receive any support at the moment, NAS support? Yeah, still we are receiving. Okay, that's why I think your fee waiver application would have been accepted. If you're on NAS support, they tend to accept your fee waiver application. That's fine. So basically, assume it's about 8 months to get a decision. There's no fixed time with this, and to be quite honest, there isn't much you can do if there is more of a delay. All you can do is sit tight and see what happens with these applications. But generally speaking, 8 months, 9 months, you should get a decision. Is it from the biometric you are talking about, or from the application we made from the date of application, generally? But it was in last year, July, so it's more than like 14 months right now. You should normally get a decision by then. Last year applications, in my experience, those applications which were submitted beginning of this year, the majority of them have got decisions now. Now, there was a problem previously when applications were submitted a year ago, year and a half ago. There was more of a backlog in those days. So some of the older cases were taking longer. But I think even those applications which were submitted around summer last year, the decisions have generally been made on those as well. So I'm a bit surprised that you don't have a decision on that at the moment. Look, in the case, you know what I did? I contact with my local MP regarding my immigration one. And the local MP chairs up with the Home Office, and they said that we already sent the letter to, they quote me, and they said that it's unusual. It's going to take time. They are basically saying that we already informed that, so it's going to be better for them to wait. Okay, look, in reality, you can't do anything. If you've been to the MP, they've spoken to the Home Office about it, and the Home Office is saying it's going to take a bit of time. You just need patience. You just have to wait at the moment. All right, that's personally, fine. Another question I need to ask you. Sorry about that. Okay, well, personally, just on that point, personally, I think you're better off
we're better off waiting, because even if the application is refused, you get a right of appeal. And even if the whole application is unsuccessful, at the age of 10, your child qualifies for British nationality at that stage. So I think you shouldn't really push them too much. Whenever you get the decision, you get it. Okay. All right. One more thing I wanted to ask you is that, sure. With this kind of application, FLIP, are they going to consider the 10 years route of each and every? No, they do. They will simply look at the application under the 7-year residence. So kids have lived in the UK. How settled are they in the UK? Can they go back to their home country? They'll look at that. I mean, the chances with the Home Office at the moment of successfully getting a visa probably about 30%, 40%. Generally, you've got a better chance in the tribunal. You will get a right of appeal if the application is refused. But thank you very much. They're not going to care about my immigration 10 years and... No, really, you should really look at the child's residence in the UK. You shouldn't use the parent's residence. But look, at the moment, you really do have to wait and see what happens. I wouldn't push them too much. Thank you very much for your call. We'll take our next call. Hello, Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल ये था कि मैंने अपने हस्बैंड के स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई किया था, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो भी मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। आपका हस्बैंड के लिए कहाँ से अप्लाई किया था? यूके में है हस्बैंड या बाहर है? नहीं, वो दुबई में है। वो दुबई में है, और उसने वो आप स्पाउस एप्लीकेशन पे अप्लाई किया है आपके हस्बैंड ने? जी मैंने की थी उनके लिए, तो वो भी मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट अभी वापस आ गया 3 वीक्स के बाद। जी, आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ ये है कि आपने जो अप्लाई किया था ना, तो इसमें आपने जॉब के बारे में क्या बताया था? जी मैं केरर हूँ, तो मैं केरर अलाउंस मिलता है, तो फिर इस वजह से मुझे वो नहीं मिल रहा है। ओके जी, केरर अलाउंस के साथ कोई और जॉब बताया था या नहीं बताया था? इनकम सपोर्ट मिल रही है, तो मेरे हस्बैंड ने अपनी जॉब शो की थी, तो उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट। ओके, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप केयर्स अलाउंस पे है, केयर्स अलाउंस के साथ अगर कोई जॉब बताया आपने जिस पे 100 पाउंड 120 पाउंड मिलते हैं, तो वो फ़ोन करके आपको जॉब के बारे में पूछ सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप अगर कंट्री से बाहर है, आपने फ़ोन नहीं उठाया, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। मगर अगर आपने कोई जॉब नहीं बताया है, सिर्फ आपने केयर्स अलाउंस बताया, इनकम सपोर्ट बताया, तो वो जनरली वो फ़ोन नहीं करेंगे आपको। इसमें सिर्फ फ़ोन कॉल का इश्यू है। आप ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समटाइम्स वो आपको फ़ोन करते हैं, मगर जनरली वो सिर्फ काम के बारे में पूछते हैं। दे ओनली कॉल अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट। सो अगर इफ़ यू आर नॉट रिलाइंग ऑन एम्प्लॉयमेंट, इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। आप ट्रैवल कर सकते हैं इसमें। जी ठीक है। और आप बता सकते हैं रफली कितना टाइम लगता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस आने के बाद? डिसीजन है अभी, जनरली स्पीकिंग डिसीजन 3 मंथ्स लग रहा है, जनरली स्पीकिंग फॉर ए डिटर्मिनेशन। आपने वो कोई फास्ट ट्रैक किया था या नॉर्मल ही अप्लाई किया था? नहीं, नॉर्मल ही अप्लाई किया जी, नॉर्मल रफली अबाउट 3 मंथ्स लग रहे हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, इसके बाद रफली अबाउट 3 मंथ्स में डिसीजन आ जाता है अभी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपने फ़ोन किया। वालेकुम सलाम। ओके, विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी भैया, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके, यो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भैया, लाइव होना है जी आपका? जी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल है। मेरा कज़न है पाकिस्तान में जी, उसको अपने चाचू ने पहले बेटा बना के लाया था। उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट उसे हांगकांग से बना के लाया था जी। ओके, तो वो फिर इंग्लैंड आ गया, और इंग्लैंड में उसका 2 बार पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। ओके, और तो उसको फिर भी ब्रिटिश पासपोर्ट मिला। अभी वो कह रहे हैं DNA टेस्ट करो। हाँ, तो ऐसे हो सकता है? 2 बार पहले 2 बार दे दिया, फिर क्यों ऐसे कह रहे हैं अभी 10-12-15 साल के बाद? वो कह सकते हैं कि DNA टेस्ट करो, चेक करने के लिए कि किस बेसिस पे उसको ये पासपोर्ट मिली है, वो कह सकते हैं ना। ओके, वो कब कहा था उसने कि DNA टेस्ट करो? कब कहा उसने? अभी 4-5 महीने हो गए हैं। अभी DNA के बारे में उसका कोई ये चल रहा है कि जनरली DNA रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक ये सिचुएशन ऐसा है, आप ऐसे करो, आपका नंबर छोड़ दो कंट्रोल रूम में, फिर मैं आपको फ़ोन करूँगा और थोड़ी सी डिटेल में बात करूँगा इसके बारे में। ठीक है ना, आपका नंबर छोड़ दीजिए। विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام. جی بھائی, what's your question? جی بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا میں ای نیشنل ہوں اور مجھے 3 ایئر ہو گئے ادھر ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے. جی ٹھیک ہے. جی اور میرے 3 بچے ہیں اور وائف بھی ادھر ہی ہے. جی اوکے. جی اور میں اپنے بھائی کو بلانا چاہتا ہوں. میں اس کو آلریڈی لاسٹ 2 ایئر سے سپورٹ بھی کرتا ہوں اور ایوری منتھ اس کو منی بھیجتا ہوں. جی تو میں 30 آور کا ورک کرتا ہوں بس. جی. اونلی 30 آور اور آپ کب سے سپورٹ کر رہے ہیں بھائی کو؟ آپ یو کے آئے تھے, اس سے پہلے بھی آپ اس کو سپورٹ کرتے تھے؟ جی میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں لیکن وہ میرے پاس کوئی اس کا کوئی پروف پروف نہیں. پروف ہے نہیں ہے؟ جی جی وہ پروف مانگیں گے اس کا, کیونکہ جو اس میں ڈفرینسز یہ ہے کہ اگر پیرنٹس کو بلاتے ہیں نا, تو پیرنٹس کا رول یہ ہے کہ اگر آپ پہ پیرنٹس ڈیپینڈنٹ ہے ابھی, تو 6 منتھس کے لیے, سال کے لیے آپ پیرنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں تو پیرنٹس کو ویزا دے دیتے ہیں. مگر جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتا ہے, ایکسٹینڈڈ فیملی کا رولز تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں صرف یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا یو کے میں آپ 1 سال 2 سال 3 سال, یہ نہیں. آپ جو یورپین کنٹری میں تھے تب سپورٹ کرتے تھے, یعنی اس کا کیا پروف ہے؟ یا تو اگر آپ پاکستان میں تھے, وہ آپ کے گھر میں رہتا تھا, اس کا پروف کیا تھا؟ وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ زیادہ ہے اس میں. اور اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ یو کے والے نارملی آپ اپلائی کرتے ہیں تو نارملی وہ اپلیکیشنز کو ریفیوز کرتے ہیں. ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز جو ہسبینڈ وائف چلڈرن پیرنٹس کے علاوہ جو لیونگ دیم ٹو ون سائڈ, دا ادر فیملی ممبرز ہے, اس کا اپلیکیشنز سکسیزفل بہت کم ہوتے ہیں وہ اپلیکیشنز. اس میں اٹس ناٹ دا نیسسریلی ابھی آپ سپورٹ کرتے ہیں, وہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے, مگر اٹس پریویس سپورٹ وہ دیکھتے ہیں. آپ جو یورپین کنٹری میں تھے یا پاکستان میں تھے تو اس کا پروف وہ مانگتے ہیں. اور یہ کیسز میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا ہے. سیکنڈلی وہ کیا کہتے ہیں یو کے گورنمنٹ والے, ہوم آفس والے, جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سیٹسفائڈ نہیں ہے کہ یہ آپ پہ جینیونلی ڈیپینڈنٹ ہے, بیکاز وہ خود بھی کام کر سکتا ہے, اس کی بھی کوئی انکم ہوگی, تو وہ بھی ایک ریزن وہ ڈال دیں گے کہ وی آر ناٹ سیٹسفائڈ آف کہ جینیون ڈیپینڈنسی یہاں ہے. آپ اپلائی کر سکتے ہیں, مگر چانسز آن این ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن اتنا ہائی نہیں ہے. اس نے بہت ایسا کنڈیشنز اس نے ڈالا ہے کہ وہ جنرلی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرس کا, بردرز سسٹرز کزنز آنٹس کا, جنرلی وہ اپلیکیشنز ریفیوز کرتے ہیں انفارچونیٹلی. اوکے تھینک یو فار یور کال. جی تھینک یو. اوکے چلو اوکے ول ٹیک آور نیکسٹ کال. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی. جی بھائی آپ کا کوشچن کیا ہے؟ My question is about tier 2 dependent visa. Okay. I want to ask that I'm on tier 2 visa work permit and I've got valid visa until 2021. Okay. And my wife also got valid visa until 2021. Okay. Now I'm going to change my employer. Okay. So I've got COS and I'm going to apply for new visa. Okay. So my wife do I have to apply visa for my wife too, or she can stay on the old visa? She can potentially actually stay on the old visa, and then what she can do is in 2021, if she needs to extend, she can extend at that stage. It won't be a problem for your wife. Obviously you have to, if you have a new COS, you have to change your visa. Your wife can potentially remain on that same visa because her status doesn't really change. She still remains your dependent, so it won't be a problem for her. Now the only difference will be this, that when you apply for your visa and it's successful, normally they will grant you a 3-year visa. So the expiry dates might be slightly different, your expiry date and her expiry date. But apart from that, it's not necessary for the wife and children. So I'm not sure whether you've got children or not, but your dependents to apply for the extension. You can get away with not applying if you don't want to apply. Okay. Right, brilliant. That was my question. Right, no problem at all. Thank you very much for your call. Thank you. Okay, so just before we had a number of questions, we were looking at the position of
European nationals, and in particular family members of European nationals, and what they need to do if their relationship breaks down. Unfortunately, we've not been able to make much progress on that. What we'll do when we're back next week on Monday at 6 o'clock, we can look at that in greater detail. Hopefully, inshallah, see you again on Monday at 6 o'clock. Until then, Assalamu alaikum.